To HTML. This is a very good and very important chapter for your future reference also. Okay, future में भी आपको ये chapter बहुत use होगा. In which we learn how to make the web page. Okay, steps how to make a web page. इसमें ये introduction है. Web page कैसे create करते हैं? Which language we use for? HTML is a language that we use for creating the web page. Okay, basically HTML एक language है जिसको हम web page create करने के लिए use करते हैं. Okay, first we read the introduction. Today in this world of computers, you can download any information or document containing text, sound, graphic or video through the internet. Okay, you can download any type of information from the internet. आपको इंटरनेट पर टेक्स्ट फाइल भी मिल जाएगी, लाइक लिखा हुआ भी मिल जाएगा, साउंड भी मिल जाएगा, ऑडियो फाइल्स भी मिल जाएगी, ग्राफिक्स भी मिल जाएंगे. ग्राफिक्स में मींस इमेजेस, like static images and dynamic images, like GIF images, PNG images. Many type of images available on the internet. Videos also on YouTube. Many type of videos available in the internet also. With the help of browser. Okay, we can search all these things with the help of browser. किससे सर्च करते हैं हम इसे? एक ब्राउजर यूज करते हैं. अब ब्राउजर मोबाइल में आप Chrome, Opera Mini, UC, and many type of browser we have, and in laptop also. इन लैपटॉप डेस्कटॉप लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, आप किसी भी ब्राउजर की हेल्प से इन सब चीजों को एक्सेस कर सकते हो. ओके, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो या इंटरनेट पर इन्हें देख सकते हो. एंड व्हाट इज द वेब ब्राउजर? Web browser is a software that enables computer to display any type of document or information present on the internet. Okay, what is the web browser? Web browser एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट का यूज करके. ओके, बेसिकली हम वेब ब्राउजर में वर्क कब कर सकते हैं? अगर हमारा इंटरनेट एक्टिव है. ओके, लाइक दिस इज माय इंटरनेट, दिस इज माय क्रोम ब्राउजर. अगर मैं प्लस टैब पर गूगल लिखूंगा तो ये कब मुझे डिस्प्ले होगा? इफ माय इंटरनेट इज एक्टिव. अगर मेरा इंटरनेट एक्टिव है, दिस इंटरनेट इज, अगर मुझे कुछ इमेज सर्च करनी है, क्लिक ऑन इमेज, आई एम एबल टू सी द इमेज ऑफ एनी टाइप of image, like computers. If I type the animals is also available. Any type of image you can see on there. Okay, if you want to see the videos is also available. If you want to see the text is also available. Okay, there many type of text is available, like kids national geography, in which the many type of text also. आप text में भी information को ले सकते हो and वीडियो की फॉर्म में भी information को ले सकते हो. information लेने के काफी sources available हैं इंटरनेट पर. nowadays very huge network nowadays internet, because अब इंटरनेट बहुत cheap हो गया है, सबके पास इंटरनेट easy अवेलेबल है, तो इसके लिए एक्सेस भी बढ़ गया है काफी. एंड डू यू नो हाउ दीज डॉक्यूमेंट आर डिस्प्ले? अब ये डॉक्यूमेंट हम देखते हैं. अभी मैंने जैसे गूगल खोला, अगर मैंने गूगल आपके सामने प्लस टैप करके गूगल का पेज खोला लाइक दिस. ओके, लाइक हाउ द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्ले ऑन माय स्क्रीन. ये गूगल मेरे स्क्रीन पर आ कैसे गया? ये कहीं से तो आया होगा, कहीं से तो एक्सेस हुआ होगा. एंड हाउ दे एक्सेस, ये है कि एक्चुअली में जो गूगल शो हो रहा है, दिस इज द वेब पेज. ओके, if we search the anything on the Google, it's show us the different web pages. अगर मैं कुछ भी इस पर सर्च करता हूँ, लाइक मैं कोई भी लाइक इनपुट डिवाइस ये टॉपिक सर्च करता हूँ सिंपल. ओके, इन विच यू सी द मैनी लिंक्स एंड एवरी लिंक विद कनेक्ट टू द वेब पेज. जिस भी मैं किसी भी लिंक पे अगर क्लिक करूंगा, वो लिंक एक वेब पेज से जुड़ा हुआ है. इफ आई क्लिक ऑन दैट लिंक, it's open web page like this. It's a Wikipedia web page. Okay, the many web pages available on the internet. Okay, काफी सारे वेब पेजेस अवेलेबल है, डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट इंफॉर्मेशन के. दिस वेब पेजेस आर रिटन इन अ स्पेशल लैंग्वेज. एंड जो ये वेब पेजेस आपने अभी स्क्रीन पर देखे हैं, इनको लिखने की एक लैंग्वेज होती है, जिनमें से एक HTML भी है. ऐसा नहीं है कि HTML ही होती है खाली. HTML भी एक लैंग्वेज है जिसमें हम वेब पेज को लिखते हैं, वेब पेज को क्रिएट करते हैं. ओके, तो बेसिकली हम सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि HTML इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेजेस. यस. Okay, and the full form of HTML is Hypertext Markup Language. HTML. Hypertext Markup Language. This is the full form of HTML. Okay, so now the next topic is what is the HTML? Okay, the topic is अब ये topic आता है कि HTML क्या है. HTML is a language which is used to make web pages. ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया. ये क्या है जिसको जो वेब पेजेस बनाने के लिए यूज करते हैं,
और इस फिर हम इंटरनेट पे उनको डिस्प्ले करते हैं। Okay, HTML document are made up of text. You can you can add the text in your HTML web page. आप इसकी हेल्प से टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, इमेज को ऐड कर सकते हो, and sometime if you have a different type of extension, you can add the video also. Okay, or and in HTML we use the tags. HTML basically is a tagging language. You see the hypertext markup language in which you use the many type of markup tags. इसमें हम टैग्स यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। इसमें आप आगे डिफरेंट डिफरेंट टैग्स भी पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप्स के टैग भी पढ़ोगे। ओके ओके, एंड वो टैग्स बताते हैं वेब ब्राउजर को कि इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे करना है। बिकॉज जब आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करोगे वेब ब्राउजर को टैग नहीं दिखेंगे आपको, बट जब आप क्रिएट कर रहे हो तब आप टैग के साथ क्रिएट करोगे। इससे क्या होगा कि वो टैग्स बेसिकली टेल द ब्राउजर दैट हाउ टू डिस्प्ले दिस कंटेंट। जो हमने क्रिएट किया है कंटेंट, वो आपको ब्राउजर में डिस्प्ले कैसे करना है, उसकी डेफिनेशन सारी किसके अंदर लिखी है, टैग्स के अंदर लिखी है कि ये इस अगर आपको टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए अलग टैग है, अगर आपको इमेज रिप्रेजेंट करनी है अपने वेब ब्राउजर में उसके लिए अलग टैग है, उसके लेंथ, साइज एंड द लोकेशन, इन सब के लिए अलग अलग टैग अवेलेबल है। ओके, बेसिकली ये इतना हार्ड नहीं है, इसे इतना हार्ड मत समझना। प्रैक्टिस के साथ, अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, प्रैक्टिस मेक एवरीवन परफेक्ट। ओके, सो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी। ओके, आप ऐसे ऐसे काफी बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत सारे वेब पेजेस क्रिएट करेंगे इसे यूज करके। आप डिफरेंट वेब पेजेस को लिंक भी कर सकते हो। यू सी ना, एंड वेबसाइट वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेब पेजेस। बेसिकली वी से द वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। एक वेब पेजेस में, एक वेबसाइट में काफी सारे वेब पेजेस होते हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो वो भी हम HTML के थ्रू कर सकते हैं, एक वेबसाइट भी बना सकते हैं और उनके वेब पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं। सो HTML are identified by their HTML and listen this thing very carefully. Okay, the one line also, it also provide the means to link the pages on the internet. That means जितने भी आपको लिंक मिलते हैं वेब पेजेस के इंटरनेट पर, वो एक वेब पेजेस ही होते हैं। सिंपली ये तो एक सिंपल पॉइंट है। एंड नाउ HTML डॉक्यूमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय देयर .html एंड .html एक्सटेंशन। जब भी आप HTML ओपन करते हो, HTML फाइल को बनाते हो, बेसिकली हम HTML कोडिंग करेंगे किसमें, इसके लिए हम नोटपैड यूज करते हैं। नोटपैड सिंपल आप अपना यहाँ पर सर्च कर सकते हो, सब कंप्यूटर में अवेलेबल होता है ये नोटपैड। इसलिए हम HTML फॉर्म को क्रिएट करते हैं जो हम बिगिनर लेवल पे सिखाते हैं बच्चों को करना। दिस इज द HTML and the HTML initially stand for hypertext markup language in which is breakdown. इसमें इन्होंने breakdown कर रखा है, what is the meaning of hyper, what is the meaning of text and markup and language. Okay, it's showing like this. Hyper is the opposite of linear. All the computer programming language are written in a linear fashion, but HTML does not follow this fashion. Okay, and linear means एक टेक्स्ट को अपने लीनियर लाइन में लिखते जाना, एक लीनियर फॉर्म में लिखते जाना। काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली लीनियर फैशन फॉलो करती है, बट HTML इसको फॉलो नहीं करती है। HTML हाइपर को फॉलो करती है, ये बिल्कुल अपोजिट है लीनियर के। ओके, नेक्स्ट इज टेक्स्ट। Text deal with English alphabetic letters and words. We can add in your web page, you can add English alphabetic letters and words also. Text means किसी भी टाइप का आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो कोई सिंबल हो, चाहे वो कोई नंबर हो या कोई अल्फाबेट हो। नेक्स्ट इज मार्कअप। मार्कअप इट्स अ पेज लेआउट लैंग्वेज। मार्कअप बेसिकली पेज लेआउट लैंग्वेज है। फर्स्ट वी राइट द टेक्स्ट एंड देन मार्कअप व्हाट वी हैव टू रिटर्न। लाइक आपको उसमें बताना होता है कि अब एक्चुअली में जब हमने लिखा है ये क्या चीज है, ये आपको किस टाइप से रिप्रेजेंट करना है, ये अब हम मार्कअप में यूज करते हैं, मार्कअप टैग्स लगाते हैं उनके लिए। And language it is not a typical programming language, it's just a plain layout. And markup language basically is not a programming language, it's simple। हम जो actual programming language होती है, जो other programming language हम पढ़ते हैं, वो यूज नहीं करते, plain text लिखते हैं बट टैग के साथ। hyperlink specification language we call that sometimes। like इसमें हम एक डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं जिसको हम टैग्स के अंदर लिखते हैं। बेसिकली होती सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज ही है। You can display HTML document on your any type of computer। और आप जो भी HTML document, जो भी HTML फाइल क्रिएट करोगे उसे किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट में देख सकते हो। लाइक आप अगर अपने विंडो में क्रिएट किया है तो आप मैकिंटोश या किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इजीली इसे ओपन कर सकते हो। You don't have to create separate HTML for the different computer।
आपको सेपरेट डिफरेंट अलग अलग कंप्यूटर्स में फाइल क्रिएट करने की नीड नहीं है। लाइक जैसे अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो और आपने गूगल ओपन किया ब्राउजर के अंदर, तो क्या आपको उसके लिए अलग तरह से कुछ लिखना होगा? आप सिंपल गूगल लिखो, गूगल ओपन हो जाएगा। दैट मींस दिस इज द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। वो एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसे आप किसी भी कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ द ब्राउजर और एनीथिंग यू कैन ओपन इट वेरी इजीली। ओके, लाइक apps also. In mobile, we are using the apps. These documents transfer quickly over the web, and it depend on the document size and the internet speed. ये आपके वेब पर इजीली अपीयर हो जाते हैं। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो एकदम दिख जाते हैं। जैसे अगर मैं गूगल मैंने अभी आपको खोला था, आपको लाइक दिस, इफ आई अगेन क्रिएट योर स्कूल साइट, लाइक डीजी कैम ओपन कर देता हूँ फॉर यू। इफ आई ओपन द डीजी कैम, यू सी it's open like this. This is also the web page. ये भी एक web page है जो show हो रहा है आपके स्क्रीन पर, in which the interlinked with the many type of different web page. So update your knowledge. T. Berners-Lee was the main leading the development of World Wide Web. जो वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपर वो किसे माना जाता है? टीम बर्नर्स-ली को माना जाता है। टीम बर्नर्स-ली is the main leading development of the World Wide Web. The defining of HTML, hypertext, markup language, and used to create web pages. ओके, एंड HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह भी आपको आगे बहुत सुनने को मिलेगा। HTTP आपने काफी बार देखा होगा, बट इसका एक न्यू वर्जन देखा होगा, HTTPS एंड URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेसिकली अगर हम क्रोम को खोलें तो इसमें आपको एक साइट दिख रही है, ये साइट है ना, इसकी ये क्या है? ये जहां पर हमने टाइप, ये URL भी, इसे URL भी बोल देते हैं। ये बॉक्स है, इसे URL बॉक्स बोलते हैं, जहां पर हम URL डालते हैं ब्राउजर में। दिस इज द URL बॉक्स। Yes, sir. Okay, and in the site in starting you see the HTTPS. The HTTPS is the difference between HTTP simple hypertext transfer protocol and HTTPS is hypertext transfer protocol secure. S means secure. जितनी भी साइट HTTPS वाली हैं ये सिक्योर साइट्स होती हैं। HTTP के थ्रू इजीली कोई भी हैकर उसे हैक कर सकता है, बट सिक्योर वाली को नहीं कर सकता। इसलिए ज्यादातर जो आप साइट्स अब नेट पे देखोगे वो HTTPS वाली होती है। HTTP साइट को खोलने में वो आपके सिस्टम के लिए भी हार्मफुल हो सकती है, बिकॉज द मैनी हैकर इट्स सिंपली हैक इट बिकॉज इट्स नॉट अ सिक्योर। तो हम अब जो यूज होता है वो HTTPS होता है। बस HTTP भी काफी वेबसाइट्स के आगे आपको मिल जाएगा। अगर HTTP लिखा हुआ है दैट मींस दिस साइट इज नॉट सिक्योर। एंड द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो ये URL बॉक्स है, इसको हम सिंपली हम अगर एक वेबसाइट को भी URL बोल देते हैं। दिस इज द URL ऑफ DigiCam, एंड ये आपका जहां पर हम URL डालते हैं ब्राउजर में, दिस इज द URL बॉक्स। ओके, आपको ये फुल फॉर्म बेसिकली लर्न रखना है। व्हाट इज द HTML, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL विद द स्पेलिंग। इंफॉर्मेशन गिविंग टू अ टैग्स टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। इंफॉर्मेशन गिविंग टू अ टैग टू गिव इट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। जो भी हम टैग्स के अंदर इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ओके, आगे हम इस चैप्टर में आगे एग्जांपल्स करेंगे, तो आपको ये भी करके दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ HTML. HTML is not a case sensitive language. Case sensitive means if you use the capital A and if you use the small a, it considers same. ये उसे सेम समझेगा। इसके लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग नहीं है, इसके लिए सेम है। काफी सारी लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव होती है, जहां पर कैपिटल ए का मीनिंग कुछ और होता है, स्मॉल ए का मीनिंग कुछ और होता है। बट इन HTML is not a case sensitive. This means the HTML command can either be in lower case and upper case. So आप इसकी कमांड जो लिख रहे हो वो चाहे आप स्मॉल लेटर्स में लिखो चाहे कैपिटल लेटर्स में लिखो। ओके, स्पेस एंड टैब्स कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। आप स्पेस और टैब्स कहीं पर अपने डॉक्यूमेंट पे यूज कर सकते हो। ये आपके जो आपका आप क्रिएट कर रहे हो उसकी अपीयरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप, ऐसा नहीं है कि आपने अगर 4 बार स्पेस यूज कर दिया तो आपके डॉक्यूमेंट में 4 बार स्पेस शो करेगा। ओके, ऐसा नहीं शो होता है इसमें। एंड जो भी हमेशा जो भी हम टैग्स यूज करते हैं इसके अंदर, सॉरी, जब भी हम HTML को सेव करते हैं फाइल को, .htm और .html एक्सटेंशन यूज करते हैं। HTML डॉक्यूमेंट इज रिटन इन टेक्स्ट एडिटर। बेसिकली हम इसमें इसके लिए या तो टेक्स्ट एडिटर नोटपैड यूज करेंगे, या गेडिट यूज करते हैं, या वर्ड प्रोसेसर भी यूज कर सकते हैं, या जैसे वर्डपैड, MS वर्ड, राइटर। ओके, आप कोई भी यूज करो, बट आपको जब ये फाइल सेव करोगे आपको एक्सटेंशन देना है .html। अगर आप .html नहीं दे रहे हो तो आपकी सिंपल HTML फाइल नहीं होगी।
अगर नोटपैड कर रहे हो तो सिंपल टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, वर्ड में कर रहे हो तो सिंपल वर्ड फाइल बन जाएगी, एचटीएमएल फाइल, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो जब भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हो, लाइक आपने एक वेब पेज क्रिएट किया एंड इफ यू गिविंग द नेम लाइक फर्स्ट, like this is your first program, you like name the first, so you write like this first.html or first.html name like this, okay? ऐसे आपको अपनी फाइल को नेम देना है। इससे क्या होगा, आगे मैं आपको ये भी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, ओके? ये बेसिकली आपको बताने के लिए है, थ्योरेटिकल पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग HTML टैग। HTML consists of text with special instruction known as tags. HTML हम टेक्स्ट यूज करते हैं जिसको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो उसके लिए हम टैग्स। सो अंडरस्टैंडिंग HTML एलिमेंट, HTML consists of text with special instruction known as tags. HTML में हम टेक्स्ट यूज करते हैं और इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ टैग्स यूज करते हैं। ईच टैग गिविंग अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। हर टैग की अपनी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। लाइक if you insert an image in your HTML document, you use the tag name is image, img टैग यूज करोगे आप उसके लिए। अगर आपको सिंपल टेक्स्ट डालना है तो उसके लिए बॉडी टैग यूज करोगे। अगर आपको पैराग्राफ डालना है उसके लिए पी टैग यूज करोगे। आगे आपको ये दिखाएंगे कैसे कैसे यूज करना है। यूज करना बहुत इजी है, बस आपको टैग पता होना चाहिए, वो प्रैक्टिस के साथ लर्न हो जाते हैं। ओके, HTML टैग टेल अ ब्राउजर हाउ टू ऑर्गेनाइज अ टेक्स्ट। यस, HTML बताता है ब्राउजर को कैसे मेरे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है, इमेजेस को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एंड अदर कंटेंट्स है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सब क्लियर होता है उसके अंदर। मोस्ट टैग्स हैविंग अ ओपन टैग्स एंड क्लोजिंग टैग्स, एंड काफी सारे टैग्स ऐसे हैं जिनको आपको उसमें आपको ओपनिंग टैग भी लगाना होगा। ओके, तो मोस्ट टैग्स हैव ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग्स। काफी सारे टैग ऐसे हैं जिसमें आपको ओपनिंग टैग भी यूज करना होता है एंड क्लोजिंग टैग भी यूज करना होता है। दे आर कॉल्ड कंटेनर टैग्स। इस टाइप के टैग्स को हम कंटेनर टैग भी बोलते हैं। दैट मींस इन व्हिच वी कंटेन समथिंग, सम टेक्स्ट और सम इमेज, समथिंग वी कैन इंसर्ट इट टैग। ओके, दैट अफेक्ट द टेक्स्ट बिटवीन द टैग्स। तो ये इफेक्ट करता है जो टेक्स्ट के अंदर हम लिखते हैं, उस टैग्स के अंदर वो आपके वेब पेज पर इफेक्ट करता है कि वो इंफॉर्मेशन किस टाइप से रिप्रेजेंट होगी। एंड इफ यू यूज द क्लोजिंग टैग, यू हैव टू यूज द फॉरवर्ड स्लैश। लाइक दिस इज द हेड of opening tag। ये हमने head को open किया and I see the I write the information like this is my first program post। Beta off your mic। Okay, and now I'm use the closing tag। Always use the closing tag with the slash, forward slash। Okay, ऐसे आप slash लगाओगे तो that means ये closing tag है। अगर आप simple लिखोगे तो ये तो हो गया आपका opening tag। Okay, and this is your closing tag। The basic difference in it, the forward slash, the closing tag we use the forward slash। some tags have only opening tags। Okay, so some tags only have the opening tags, जैसे some tags have a closing tag also like this, and some tag have a only the opening tag like br like this। and इसके बीच में आप जो भी आपको heading में represent करना है, like जो भी आपको टैग का नाम रखना है, मैंने इसको हेडिंग में इसको ये लग दिया, इसके अंदर वैल्यू लग गई, तो H1 में ये मुझे हेडिंग रिप्रेजेंट होगी मेरे वेब पेज के अंदर। सो अपर केस और लोअर केस लेटर्स कैन बी यूज्ड फॉर टाइपिंग टैग्स। आप दोनों ही यूज कर सकते हो, बट यू शुड यूज अपर केस लेटर टू मेक द टैग स्टैंड आउट। बट प्रीफर किसे कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप दोनों ही यूज कर सकते हो, आप अपर भी यूज करो, लोअर केस भी यूज करो, बट प्रीफर किसको कर रहे हैं कि अपर केस यूज करो, इससे आपका डॉक्यूमेंट और अच्छे से दिखता है। जैसे इन्होंने एक टैग आपको यूज करके दिखा रखा है, इसमें टाइटल टैग भी होता है। अगर मैं हेड से ऊपर एक टाइटल टैग डाल दूं, इट्स लाइक दिस, व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर वेब पेज, लाइक दिस। मैंने भी सारा स्मॉल यूज कर लिया, चलो मैं भी कैपिटल यूज कर लेता हूं, टाइटल। ओके, एंड टाइटल दे देते हैं माय फर्स्ट वेब पेज। ये मेरा टाइटल है पेज का, वेब पेज का। ओके, एंड क्लोज द टैग। This is the closing tag, this is the opening tag, and this is the closing tag। The book is also showing this is a title, is a opening tag, this is a text, and this is a closing tag। Okay, like this you can represent a tag। and we have a two types of tag। ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है। तो दो टाइप के टैग होते हैं, एक होते हैं कंटेनर टैग्स और एक होते हैं एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग के अंदर हम कुछ नहीं लिखते, हम ज्यादातर कंटेनर टैग्स के अंदर लिखते हैं जो भी लिखते हैं। वो आपको जब आगे बुक में हम चैप्टर वाइज चलेंगे तो आपको सब चीज क्लियर होती चली जाएगी।
Container tags. Tags that have both starting as well as ending. Okay, these tags that have also the starting tag and also the ending tag, जिसमें आपका starting tag भी होता है like the title, इसमें opening tag भी है और इसमें closing tag भी है. इस type to tags को हम क्या बोलते हैं? Closing tag. And we always use in a closing tag forward slash. और हमेशा हम क्या यूज करते हैं इसमें? ब्रैकेट्स, एंगुलर ब्रैकेट यूज करते हैं. या आप इसे ग्रेटर देन स्मॉलर देन साइन भी बोल सकते हो. ओके, जैसे हमने इनमें यूज कर रखा है. मैं इसको थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ. तो इसमें आप देखो, इसमें हमने टाइटल यूज कर रखा है. दिस इज द ओपनिंग टैग एंड दिस इज द कॉलिंग टैग, सॉरी क्लोजिंग टैग. एंड द मेजर डिफरेंस इन इट, वी यूजिंग द ओपनिंग टैग इज अ फॉरवर्ड स्लैश. क्लोजिंग टैग में हम फॉरवर्ड स्लैश यूज कर रहे हैं. Okay, this is the difference between opening and closing tag. Opening tag is simple and closing tag is also simple, but the main difference is we use the forward slash in a closing tag. That means it represent that this is the closing tag. That means ये tag यहाँ पर खत्म है. ये इसे ये बताता है आपके वेब पेज को या वेब ब्राउजर को. Okay, तो इसमें 2 टाइप्स के आपके टैग्स हैं. एंड फॉर एग्जांपल इन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं. जो HTML सबसे फर्स्ट टैग होता है. सबसे पहला हम टैग लगाते हैं कि आपका HTML होता है. सबसे फर्स्ट टैग लाइक दिस. फर्स्ट यूज द HTML. एक तो से स्टार्टिंग में लगाते हैं एंड लास्ट में जहां आपका प्रोग्राम बिल्कुल एंड है, एक से यहां पर यूज करते हैं लाइक दिस. अब ऐसा नहीं है कि आप अगर कहीं पर टैग आप स्मॉल में लगा रहे हो, कहीं पर कैपिटल में लगा रहे हो. यूज ओनली वन लैंग्वेज. प्रेफर इज कैपिटल, बट इफ यू आर यूजिंग अ स्मॉल, सो ऑल टैग्स इन अ स्मॉल. ओके, इससे आपको आइडेंटिफाई करने में क्लियर होता है, प्रोग्राम में क्लियर होता है. जैसे मैंने अभी इसमें कुछ स्मॉल लगा दिया, कुछ कैपिटल लगा दिया, तो आई नाउ कन्वर्टिंग ऑल इन अ कैपिटल. ओके, ऐसा नहीं करना है कि आपने कुछ टैग तो स्मॉल में कर दिए और कुछ टैग आपने कैपिटल में कर दिए. ऐसा नहीं करना है. ओके, एंड द BR इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी टैग. ये BR है, ये बेसिकली ब्रेक लाइन होता है नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, लाइक एंटर. ये आपका सिंपल एम्प्टी टैग का एग्जांपल है. अभी आगे हम एम्प्टी टैग को भी देखेंगे, कौन कौन से एम्प्टी टैग्स होते हैं. ओके, द एम्प्टी टैग, द स्टार्टिंग टैग. एम्प्टी टैग बेसिकली स्टार्टिंग टैग. इट्स मूव योर कर्सर ऑन द नेक्स्ट लाइन. वेब पेज में अगर आपको एक लाइन का गैप देना है, एक लाइन का स्पेस लेना है प्रॉपर, तो आप उसके लिए BR टैग यूज कर सकते हो. द टैग्स दैट यू हैव ओनली द स्टार्टिंग, देयर इज नो नीड टू क्लोज देम. आपको इसे क्लोज करने की नीड नहीं है. क्लोजिंग टैग लगा सकते हो, बट इज नॉट रिक्वायर्ड. दिस टाइप टैग्स वी कॉल्ड द एम्प्टी टैग. Okay, and just in which tag we have to use the ending tag also. अगर आप नहीं लगाओगे तो वो टैग को एक अलग तरह से रिप्रेजेंट कर देगा. आपकी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर जैसा आप चाहते हो ऐसा यूज नहीं करेगा. ओके, तो सिंपली जब भी आप लैंग्वेज यूज करते हो, HTML, अगर आप HTML में फॉर्म अपना वेब पेज क्रिएट कर रहे हो, इट्स नेवर शो द एरर. ये एरर शो नहीं करता है. एरर बेसिकली हमें पता कैसे चलता है? जैसा हम वेब पेज पे चाह रहे हैं डिस्प्ले करना, जब हमें वो शो नहीं हो रहा है, दैट मींस समथिंग इज मिस्टेक इन माय कोड और इन माय टैग्स. ओके, इससे आइडेंटिफाई करना होता है. एंड आगे हम कुछ एट्रीब्यूट पढ़ेंगे इसके. ओके, इन दैट here we discuss what is the attribute and what is the use of the attribute. Attribute basically we use for the some work that we can do on the tag. That like we can change the color of the text of the font. In the example you see the color attribute that offer option for the tag. Some tag have attribute, some tag, not all tag have attribute, some tag have a attribute that offer option for the tag. Because the empty tag don't have any attribute, because these are the empty tag. Most attribute work by setting a numeric descriptive value. Like for basically attribute we used for the formatting, like change the color, change the style, okay, change the size, change the alignment. For these work we use the attribute, and for the different works we have a different types of attribute. Okay, in example they share with the one attribute that called a color attribute, and color attribute is used for changing the color. By default the color of your text is black, so with the help of color attribute you can change it. You can change into a red, green, yellow, violet, any color. Quotation marks is this. Basically they call the double quotes. This is the quotation marks. The double quotes is a quotation marks. Yeah, double quotes. Okay, sir. So next is entity.
And the attributes always go inside the opening HTML tag, and all we always use the attribute in a opening HTML like this. This is the opening HTML tag, so we always use a attribute in a open HTML tag, not there, always in opening. This is the opening tag, and this is a closing tag. So we always use a attribute in a opening tag. Okay, and always use sorry, I'll always give the value in a quotation marks like this. Like this, I write the value in a quotation. You see, in it and in it. Okay, and next is entities. Entities are some special such as copyright symbol, like for example, like copyright symbol, or a fraction, like 1 upon 2, 2 upon 3. If you want to denote these type things in your web page, so you can use an entity. Entity always start with the ampersand and with the semicolon. Okay, like this. If I use the some entity like and ampersand copy semicolon. If I use this in a web page, it show the copyright symbol, and copyright symbol is look like this in your web page. Okay, for the example, the code ampersand copy semicolon adds copyright symbol to your web page. Okay, ये आपको web page जो copyright का symbol है ये आपके web page में show करेगा. Okay, and next is avoiding syntax error. I also explained this thing in morning. You should always check your code to avoid HTML error. Okay, like always, if you open the tag, so always close it also, if required. Okay, because in some type of tags, the closing tag is not required. Like these type tag we called empty tag. Most HTML editor have feature that highlight wrong tag syntax. This feature in a other HTML editor like Eclipse, Blue Chip, and a Notepad Plus version. They also have a facility to show the wrong syntax. Syntax basically is a method to writing a code. Syntax basically क्या होता है? Method है for writing a code. Sir, writing method. Yeah, is all programming language and all type language have a own syntax. Yeah, you can see our Hindi. If you're writing a Hindi in your notebook, the Hindi writing method and Hindi syntax is different, the English syntax is different, and the mathematics is different. So basically syntax is a writing method of your code in your editor. Make sure your tags have a brackets like this. This is the brackets. These brackets show the tag. Okay, this is a open bracket and this is a closed bracket. The two bracket you use, this is called a bracket. In bracket you see the HTML. This is the opening tag and this is the closing tag. Make sure your tag have a bracket. Closing tag include a slash attribute, and always closing tag always have a slash attribute. This is a slash attribute. This is a slash and slash, and these all are the closing tag. So how to identify this is a closing tag, so that have a slash attribute in it. Okay, so it show the example p tag they use and the alignment attribute in it, and they say that center, because we have a 4 type of alignment. By default alignment web page understand is left. Like in a document, in Word document, by default alignment is left alignment. So in your web page also by default alignment is left. So you can change it with the help of align attribute. You can convert into center, right, or justify. We have a 4 type of alignment. Okay, so you see the proper nested tag. This is the proper nested tag. We also use as a proper nested tag in a body tag. We have a p tag. First is HTML tag. Under the HTML we have a head tag. Under a HTML we have a one tag also that called h1, and then body, and under the body we have a paragraph tag. Okay, so other tag also
I can write like this also, like this. This is a bold tag. Okay, it's a now it's proper nested. Under the P, it's a B. Like P under the body, and under the P, it's a B tag. Okay, like this you can use a proper nested tag. The one example is shown in the screen. Always consider using new line to type a code. Okay, always type a new tag in a new line. Like I use a every tag for a new line, like head tag for a new line, h1 in a new line, body is for new line, and p also for a new line. B is under the p tag, so you can use in a one line. Otherwise you can type like this. Okay, and next is uh, the main reason if you use a new line for typing a code, that your HTML code is more readable. Like if you're typing all things on in a straight line, like this, it's not readable. It's confusing. It's so confusing. So if I use for every tag for a single line, it's very easy to readable for the other person also. If you make this code and your other friend or your teacher see your code, it's easy to understand. Next is rendering HTML. When a browser display a web page, it retrieves the HTML file for that page from the server. Like when you web page is you when you develop a web page, okay, and when you update your when you upload your site online, so always when user, okay, when user or browser display a web page, when user click on a link, and and where we click on the link for the display on a browser, we use a browser for displaying a web page. Basically हम site को access करने के लिए we always use a web browser. Many type of web browser we have, like Chrome, Opera Mini, like Safari, and Firefox. So when browser display a web page, it retrieves the HTML file for that page from a server. And if I locally doing this, like this time I saved this file. Okay, I saved this file is first.html. That name of this file is first.html. And when you save the file with the .html, it's saved like this. Okay, in a form of your by default browser. My by default browser is Chrome. And now when I open this, double click on it, it's open in a web page. And now this is my web page. You see the copyright symbol. I use the ampersand, and this is a small web page. This is my heading. This is the other heading h1, and this is a paragraph. This is a small one paragraph that I used. Okay, and I use the bold also. So now it's a bold. It's a bold tag. So this is a small web page. So my content, this content is shown on a web page. It's like this. Okay, because it's very little content. So in the next step, in the next topic, next topic, I will explain you how to make the paper, how to make the web page, and which type technique we can use, and make a better web page. Okay, rendering HTML. Like when a browser display web page, it reads the HTML file for that page from a server. But on that time, the server is my computer, because also saved in my computer and see the only locally. Because अभी तक this page not online. अभी मैंने online नहीं डाला इसे. So basically, this is a local server. I'm using my computer as a server. So when I click on that on the file, on this link, on this web page, it's open in front of me. Okay, and if you are doing this online, it's always ask to the server to upload the web page on a browser. It's a basic concept that browser used web pages. Read the HTML tags to determine if your web page have a HTML tag. So the browser read the HTML tags, determine how the content should be formatted and display the page. Okay, and to see the content, how the content is formatted, and then display the page in front of you. Because not all web pages in a HTML language, not all.
because mostly as tags, mostly other languages we also use for the making of web pages like Java and C hash. HTML is the very basic language for making a web pages. The HTML tag tell the browser which HTML tag, these HTML tags, these we use a different type of HTML tag. Now these HTML tag tell the browser how to show the images, how to show the video, and how to show the audio. For images, we have in HTML we have a img tag. Img tag is for use for the display a image in a web browser. Video tag is used for the display a video, simple video tag, video, and audio tag we have also for displaying the mp3 files on a web page. And the other track tag, we also have a track tag in HTML for displaying the audio files and mp3 files. And for the other content, we also have a different type of tag that integrated with the pages. Okay, when we use in a HTML, like in this time, in this note, in this small HTML program, we use a some tags like HTML is a basic tag, so head, h1, body, p, b. Okay, now so we use a 1, 2, 3 and 4 tags in it. So if I want to display a picture, so for this you have to use a image tag. This is called a img tag also. This is a image tag. So in image tag, you can give the name of the picture, but picture you have in your computer. आपका picture आपके computer में होना चाहिए if you want to display in your web page. Okay, you can give the name of the picture. You can give the link of this picture. HTML versions. HTML has gone through several versions. Now HTML we are using now HTML5. The most recent version of HTML is HTML5. So HTML gone through a several versions, each of which expand its capability. And every version they have a new thing, new capabilities, like new like some tags added in every new version. Like although most browsers still support HTML version 3.2, 2.0, version 4.01 includes rule for using more than 90 HTML tag. In version 4.01, we can use a 90 HTML tag. That means we can use 90 types of HTML tag in version 4.01, HTML 4.01. It has an improvement of previous version, because previous version that have a less compared to 4.01 tags. By adding better support for multimedia, they also provide the new version of HTML also provide other better support like multimedia scripting. Scripting means that when we typing when typing a code in a notepad, not always in a notepad, in any text editor. So okay, style sheets. The other feature is style sheets. This version offer new features also for creating a web pages. Basically, these all features we can see in when we are using a text editor like Eclipse and Blue Chip. The most recent version of HTML5, the version rules of using more than 100 different HTML. In version 4.04, we use 90 HTML tags, and in HTML5, we have a 100 HTML tag. HTML5 is an improvement of previous version. It is also the improvement of previous version, and previous version is 4.01. HTML5 is also the improvement version, including new tags. They also in it also include a new tags for defining common types of web page content, better support for audio and video, and drawing capability with the new canvas tag. The new tag that launched in HTML5 is canvas tag. HTML5 is succeed HTML 4.01, which was released in 1999. HTML5 ने किसको रिप्लेस किया है? HTML 4.01 को. इसको कब रिलीज किया था? In 1999 में. Okay. And the next is XHTML. XHTML, its full form is extensible hypertext markup language. It is an alternative language for coding web pages. XHTML is also tag based and uses many of the tags used in HTML. It's an alternative language like HTML.
Okay, in which we also use the tags for displaying the information in a web pages. In XHTML, all tags must be closed like HTML. Tag names, attribute must be coded in lowercase. Okay, so you see that in the XHTML, they say that we use the lowercase. That means we write all things in a small letter. XHTML is a case sensitive because it say estimate names and takes name must be coded in the lowercase. Attribute values for tags must be surrounded by quotation marks. This is the same like HTML. Attribute value for text must be surrounded by the quotation marks. EM is simply like a HTML version. In HTML version also, we use a quotation marks for displaying the attribute values. Most modern browser like Chrome, Opera Mini, Safari, and Firefox can read both languages like HTML and XHTML. Okay, so next is HTML editor. In this, we talk about some HTML editor. HTML document are plain text document. So you can use any text editing program to code HTML and create a web page. So basically, they tell us अब कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रोग्राम यूज कर सकते हैं एडिटिंग प्रोग्राम लाइक MS Word also. We can use MS Word also. Like by default we use the notepad sometime, but if you use the MS Word, so you can do the coding in MS Word also. Basically in MS Word we type a document. Okay, so they also tell you because MS Word is also the text editing program, so we can type or code in MS Word also. But for the clarity and for the better view, we use the notepad. A text editor is a program, and what is a text editor? Basically is a program in which user enter a coding, and a user can easily change it and save, and also take a print of the coding with the help of text editor. Very familiar with the notepad. Text editor don't have many advanced feature, but they do allow you to develop HTML document easily. Like the simple text editor like notepad, in Apple Mac computer you find the text edit, and in Ubuntu you see the gedit, GEDIT, gedit. So these HTML tags is not very second. Okay, these HTML tag is not very like very advanced feature. Okay, but you can develop very easy way any type of HTML document because it's very easy to use. And the other HTML editor like Eclipse and Bluefish are dedicated program for writing HTML code. These Eclipse and Bluefish especially for the HTML coding and managing a web pages. In this program, you can also see the syntax error. Okay, when you are when you are mistake in any code in any syntax, it's showing you, it's highlighted your mistake and it highlighted your error that you can find easily. These programs provide basic text editing function as well as more advanced functions that the advanced feature don't have by the notepad and text edit and gedit, but these Eclipse and Bluefish have a advanced features that very helpful for coding a HTML, like color coding for various HTML. The advanced feature like color coding, menus to insert HTML tag, in which you can see the many type of HTML tags automatically available in an insert tab. Okay, like if you want to use a canvas tag, okay, or if you want to use a image tag, so in this in Eclipse and in Bluefish, you blue image tag or any audio tag or video tag already written in a insert option, and you simply click on insert and click on any other tag that you want to use in your code and simply click on that and your code display on your browser. सिंपली कुछ नहीं करना आपको इन एडिटर को यूज करने के लिए, सिंपली कोई भी कोड आपको चाहिए, कोई भी टैग चाहिए, सिंपली क्लिक करना है एंड दैट टैग डिस्प्ले ऑन योर in your editing software, and you can only change something according to your choice and your program is ready. So it's very easy to use. Some
they also give you the spell checker facility if you write any spelling mistake. So it's also like Word. It's also have a spell checker. These programs save your time. Yeah, these programs save your time because many things they have automatically already written in this, like in tags, or they also give you the spell checker facility, HTML, and offer a graphical environment for building web pages as well as a text-based environment. Okay, but I recommend you if you want to start a coding and if you want to start a web pages, so start with the Notepad. Next is Wing Editor. You can also create a web pages using Wing Creator, such as Adobe Dreamweaver. Adobe Dreamweaver is also the web pages text editor. Amaya, Adobe Go Live, or Coffee Cup HTML editor. These all are also the HTML editor like Bluefish and Eclipse. So Wisewing Editor is a program that provide a graphical user interface. Graphical user interface means that in which you can see that allow a developer to preview the web page during its development. Like if you create use a single one tag, so directly on a screen on the other side you can see how your tag show in your web page. Like जो आपने किया है वो आपको शो कैसे होगा. Already have a other window in which you can see your preview of your web page. And the Wisewing acronym is what you see is what you get. That means जो आपको दिखेगा वही आपको मिलेगा. What you see is what you get. This is the principle of Wisewing. Wisewing editor creates the HTML code for you while you add elements to the web page. In which we also have a ready-made content available that you only have to add an element in your web page, which means you don't have to enter HTML tag directly. All HTML tags are available in the Wisewing editor. You only choose according to your need, like which tag you have to use in your web page. So you simply add element. Like in Eclipse and Bluefish also we can insert a tag with the help of insert option in a menu. So in Wisewing editor, the name is different, only add element, but work is same. And the other application, word processor, provide advanced editing and formatting features. In word processor you can also type your web page tags, like web page coding, but any formatting you apply, the text will not appear when you view a document. Like if you use a web browser, word processor, any other type of formatting, like you bold some content and you colored some tag, so that things you're not able to see on web page, because if you want to use these things, if you want to see the color in a yellow of your text on a web page, so first you use the tag, which these tag for like font tag or any other tag for the changing the color. Okay, it's only for displaying to you, not a browser. अगर जो आप वेब ब्राउजर में कोई भी एडिटिंग चेंजिंग करते हो, that only you can see in your word processor, not in a browser. For the browser we use the tags. Okay, so while using a text editor or word processor, कोई भी आप text editor and word processor if you use, you must first type the text for the web page and then add HTML tag. Okay, like which type text you want to enter in your web page, first add this and then add HTML tag that you want to add in your web page. Okay, and which type tag you used in your coding. Okay, so your web page display like this. Like if you use the paragraph tag, it's your text to display on a paragraph style, and if you don't use the paragraph, it simply display on a whole screen, like this time that's showing in front of you on from left to right. It's all separate in a one line, on two line, and depending on your paragraph कितना बड़ा आपका पैराग्राफ है. Web browser is used to how the web page appears, and web browser we use for how the web page appear. And basically if you're using a simple notepad or wordpad, so you only
have to you only have a one option to display the web page is a web browser. Without web browser, you cannot see your web page that you make in a word processor or in a notepad. Many popular software applications also provide feature that enable you to develop web page easily. Like in Microsoft Word, in Excel, in PowerPoint, for example, have a save as a web page feature. You see in your PowerPoint, in your Excel, in your Word, you also have a web layout preview. The web layout preview, it's used for see the content, how the content is shown in a web page. If we create this document as a web page, तो how I content हमारा content किस टाइप से शो होगा स्क्रीन पर, तो ये हम डायरेक्ट वेब लेआउट व्यू करके भी देख सकते हैं. This feature is also available in Word, Excel, and PowerPoint. Okay, and that convert a document into if you save if you save your web page as a save as a web page feature, like if I open Word in front of you, I'll show you. It's easy to understand. Okay, like if I save, like if I write something like what is HTML, and now I save this file. First you save as a single file web page. If you use this or simply like web page, so it's convert into a web page in a document. I'll show you how. Okay, now you see, now this is the web layout preview. It's called a web layout preview. Okay, you can see if you see this information in your in a browser, it look like this only, that is showing. Now you see, I saved a Word file in a save as web page, so it's converted into a web page. Okay, and if I display this page in a simple web browser, it's look like this because I only write the what is HTML. Okay, you like this you can also make a web pages with the help of word processor software and Excel and PowerPoint also. Okay, sir. Okay, and next is Adobe Acrobat also has an export feature that create HTML files. In Adobe Reader we used the Adobe Acrobat also have a feature for export feature that create HTML files. Okay, each of these application also allow you to add hyperlinks. We can also add a hyperlinks that you see in a website. So you see some links on your screen, and you click on that link, and after that you move on the next page. And if you and on the next page you click on another link that you move on the next page. The blue link, we called a hyperlinks. Okay, we can also create these link in our web page. For the hyperlink, we use the anchor tag. We denote with the A, anchor tag. For the HTML, in the HTML, we use for the hyperlink anchor tag. Drop down box, we can also add in it options, buttons, scrolling text to the web page. For the button, we use the button tag. BUTTON, button tag. These advanced web page features make it simple to save any document like in spreadsheet, database or in presentation. Okay, so basically हम spreadsheet, document, अगर database and presentation किसी के भी आपको document को आप save as a web page करोगे, so it's directly convert into a web page like this. जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था, like this. Okay, because I make this file in a Word and I save as a web page, so it's converted into a web page. And now is web browser for HTML. For a web browser, we have a different type of browser like Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Opera, and many more web browser available on the internet, like Internet Explorer. It's a Microsoft web browser. Now its new version is available. It's Microsoft Edge. Now, the web browser is software that display the result web pages. You can also use a browser to display HTML document. Yes, we can use it. You can save locally on your computer. Yes, because
this web browser is locally saved in my computer, so we can I can also display in these web pages in my web browser. Okay, web browser is used for the online content, and also used for the offline content, also for offline HTML document. Because when we save a file in a web page, it's converted to a HTML document. So this is the HTML document. You see, the type of this Okay. document is HTML document, Chrome HTML document, Chrome HTML document. Okay, when you're coding HTML, you can use web browser to text your work. Yes. Okay, and next is, most computer operating system come with a web browser. Yes, already installed. If you buy a new computer, the already installed web browser in Windows 10 is a Microsoft Edge. Okay, the Internet Explorer in if you have a Apple Mac computer, they have a Safari browser. And if you want to download any other browser in your computer, the Mozilla Firefox, Opera Mini, and Google Chrome are available, on the internet, and these are a free web browser. You can use it. Okay, the browser provide a variety of feature, including the capability to locate the web page. You can easily move forward or backward in your web browser with the help of this button. You can see now this is a backward, and this is the forward. Like click to go forward and click to go backward. With the with this button, you can move in your browser up, backward, and forward. Okay, to bookmark also, you can create a bookmark also in your web browser. If you want to create this page or this page as a bookmark, so simply click on that, add a bookmark, and you can save this web page in your browser. And if you create any bookmark that's saved in there, that I make these bookmark in my browser, ये सब मैंने bookmark बनाए हुए हैं. So like this, you can also save a bookmark in your web browser. Okay, and to locate a web page using a browser, you need to type its uniform resource locator in the browser address or a location bar. In browser, this is a URL box. This is in which we can type any URL, and it display the information according to this URL. Like if I type Google, Google is open in front of me. Okay, if I type any other website and any other thing search, so they use the Google search engine for searching my information. Okay, so browser it's work like this also. A hyperlink also called link. We can, like if I search something in my Google like HTML, we search कर लेते हैं. Okay, you see, these are the links. These are the link. The blue, these are the link. We can say the hyperlink, and we can say the link. इनको हम hyperlink भी बोल सकते हैं, link भी बोल सकते हैं. Both are the same. Okay, so next is steps for creating web pages. To make your web pages look good and be easy navigable, always plan in advance before taking on any project. Like if you want to create any web page, so first plan your web page. First of all, you should know what you want to display in your web page. Like what you want to display on your web page, make a list according to this, make a topic, collect some pictures, gather some information. Like next topic is same, gather information according to your topic. First select a topic and then collect the information like text, images, diagram that you want to display in your web page, some contact numbers if you want to display in your web page, and etc. Other information also, like some type of list, like some type of table if you want to display. That is, and collect all these things, and then start making a web page. Okay, pertaining to the topic of your web page, because not create a single all information on a one web page. If you select a topic, and this topic have a other subtopic also. Okay, so for the other subtopic, you can make a different web pages, and connect all web pages with the help of hyperlink. Organize information, like information may be divided into different parts. For example, if you select like topic computer. Okay, computer your topic, and first web page is in which you define the computer. Okay, and in second web page
you define the types of computer, and in third web page you define a particular type of computer like laptop. You can all define the laptops. In fourth web pages you define desktop computer, like this. So organize information divided into a parts. Each part should make a separate web page. Okay, the page should contain enough information about the concept. Okay, enough information. Enough information means first you collect the information according to your need. Like आपको कितने requirement है information का, like how much data you required for displaying in your web page. Next is enter text, and after that, if you select a topic, you gather information. Okay, and then start entering a text in your text editor and start creating a web page. Each web page, create a separate document. Okay, and after that you can connect this document with the help of hyperlink. Okay, and HTML tags may then be added to the text that we do in it, and the document thus become web pages. Okay, and then you save the file with the .html extension. Add images. You can add image to make your web page look more attractive. Basically, we can add an image in your web page for attraction. Okay, you see on the internet, in some web pages you find up lots of pictures, so you can attract of this picture of this web page. Okay, you can scroll down and down, you see many type of picture. So you can also add in your in your web page. It's a many type of pictures related to your document. Use a scanner for images or find them on the internet. Or make sure the picture are not copyrighted, are licensed picture used, not copyrighted. Otherwise, if you create a web page and when you upload your website on online, and if you use the content, that content have a copyright data, so your website is down. अगर आप कॉपीराइट यूज किया, आपने किसी अदर की इमेज यूज की है विदाउट इंफॉर्मेशन, सो वो आपको कॉपीराइट कर देगा, आपको पर केस भी कर सकता है. Add hyperlinks for connect these all web pages that you make. If you make a 5 web pages, so connect these all web pages with the help of hyperlinks. So you can add hyperlinks. Okay, and to display, basically you can add hyperlinks or links that reader can select on your web page to display other web pages. To displaying the other web pages, you can use the hyperlink. Like you create the all 4 web pages hyperlink on a number 1 web page. Okay, and you can create all 1, 3, 4, 5 web pages link on a second web page. So basically it's depend on you. Okay, basically आपको सब पेजेस पे लिंक डालने हैं अदर वेब पेजेस के, या आपको नहीं डालने हैं. इट्स ऑल ऑन यू. ओके, आप किस टाइप से साइट बनाना चाहते हो, किस टाइप से वेब पेजेस ऐड करना चाहते हो टुगेदर. लिंक हेल्प्स readers to easy browse through information of their interest, and link help reader to easily browse information of their interest. Publish web pages. When you finish creating your web page, you can transfer the web pages to a computer that make pages available on the web. You should then test the web pages to ensure that your link work properly and your information appear the way you want it to appear. Okay, you can see these things in separate web pages also, and after completing the task, you can start from the first to end. Like test all web pages that is work properly, the link work properly, the information is appear that I want to appear on the screen. Okay, जैसा आपको चाहिए था सेम सब आपके अकॉर्डिंग ही दिख रहा है. So after that you can publish your web page online. Okay, so next is viewing HTML code in a browser. They show the example of Internet Explorer. In Internet Explorer, if you want to see the coding of the page, so in this you have a feature of view option. In view option, when you click on view option, they have an option of source button, source. Okay, and when you click on source, it show the coding of the web page. या पूरा आपको वेब पेज का कोडिंग दिखाएगा अगर आप इस टाइप से करोगे. This feature is also available in Chrome, but I think the shortcut key is available.
So you see, this is a source. Oh, this is the element. You see the all ना my Internet Explorer में देखना है तो in which you see the option in view tab they have a source option. You can click on see. You can see the all coding of your coding of your web page and other web page also, not your no other web page also, because your coding web page, your web page coding you have already. And these are some versions of HTML. HTML launch on 1991, and HTML plus launch on 1993. HTML launch in 1995. HTML 3.2 in 1997. HTML 4.01 1999, and HTML year on 2000, and HTML5 in 2012. So the important thing is these years are very important. So learn the year of this. Okay, in which this Okay, sir. in which the version launch, कौन सा version कब launch हुआ है ये आपको याद होना चाहिए for the exam perspective. Okay.